कम बैक टू श्री एफसी। मैं आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और यार आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम। मैं ये कहूंगा वी आर राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द लीग, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और मैं एक ही चीज बताऊंगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे कि वी आर गोना फेस एज चेल्सी फैंस फॉर अ डेकेड। और ये टीम एक ऐसी है, आई थिंक वी हैव गॉट अ बेस्ट अटैक राइट नाउ इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैं कहने के कहूंगा यार कि कहीं ना कहीं 2013 में हमारा अटैक बहुत एक्साइटिंग था। कहीं ना कहीं इफ आई हैव टू से वन मोर थिंग 2009-10 में तो वी वर फैंटास्टिक, बट डेप्थ और जिस तरीके से अभी हम अटैक कर रहे हैं, आई रियली डोंट थिंक वी हैव हैड अ बेटर अटैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और कहाँ हम 2018 में थे, कहाँ हम अब यहाँ पर है। आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट्स बीन बिहाइंड द सीन and the way we are going right now. I'm so proud of the whole team, the whole recruitment staff, the board, because we are absolutely awesome right now. फिर इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा साउथहैम्पटन मैच की, उसके बाद विल हैव अ चैट ऑन आर्सेनल, हम बात करेंगे लिवरपूल पे, और हम बात करेंगे व्हाई चेल्सी इज राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। और टाइटल यार इस सीजन आए ना आए, नेक्स्ट सीजन, उसके बाद मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जहां पे आई बिलीव दिस चेल्सी टीम इज गोना डोमिनेट फॉर अ डेकेड। And you will agree with me. And I'll talk about Arsenal, I'll talk about Liverpool, I'll talk about Manchester City and why they need to capitalize where we are developing. Because एक बार हम develop हो जाए, they are going to regret it for the future. And if you are not, be scared of the Chelsea team. मैं warning दे रहा हूँ, be scared of what we are doing. I'm not joking. Be scared of what we are really doing. तो यार जल्दी से, आई थिंक इफ यू कैन रियली सी मी प्रॉपर्ली, या आज साउथहैम्पटन मैच आई एम सो प्राउड ऑफ द टीम जिस तरीके से हम खेले। जिम मैनेजर ने अनाउंस करे थे 7 चेंजेस। मैं यार थोड़ा डर गया था, मुझे लगा कि इफ वी ड्रॉप पॉइंट्स इन दिस मैच यार द मेल्ट डाउन एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस चले जाएगा। बट दैट शोज द डेप्थ चेल्सी हैव गॉट, द वे वी वेंट देयर एंड डिस्ट्रॉयड देम। जिस तरीके की फुटबॉल हमने खेली, द वे वी प्लेड अवे टू साउथहैम्पटन, वी बैटर्ड देम। पहले स्टार्टिंग में वी गॉट द गोल फ्रॉम कॉर्नर, फिर मैं कहूंगा पुअर एंजो फर्नांडिस मिस्टेक, बट इवन आफ्टर दैट वी वेंट देयर, वी स्कोर 5। और मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे 15-20 गोल नहीं मारे। वी कुड हैव स्कोर्ड 13 to 14 goals. Felix missed 3 chances, Meduke missed 2 chances, Palmer missed 2 chances and Kuku missed 1 or 2 chances. हमने 9 से 10 chances तो मिस ही करी है इस मैच में। So it was a fantastic performance. Noni Meduke could easily have had 3 goals, 3 assists. What a performance. Palmer again getting the goal and Kuku getting a goal and assist. उसके बाद यार Felix I think had a very good game, but the end product again Gusto in the second half, fantastic. Tosin, Disazi very good in the second half. And उसके अलावा मैं कहूंगा each and every player, Sancho came on, really played well. And I think this was a match against, मैं सच कहूंगा, a poor opposition, but we have to get a job done. We are now the highest scorer in this division right now, 30 Premier League goals, and I'm so proud of the whole team. I'm really, really proud of the whole team and the way we are building. And big up to a big support of the channel, and thank you so much, bro. Your each support, man, really, really means a lot to me. Thank you so much, yaar, Manchester City fan. Bangladesh won in West Indies for the first time since 2009. City ended the 7 matches winless run, and Barca ended the 3 match winless run. It was a perfect weekend. Like मैंने देखा था, like वो मैच मेरे यहाँ live नहीं था, but I was checking the score every time क्योंकि it was a historic win. मैं थोड़ा surprised था, bro, but in terms of like start अच्छी नहीं थी उस मैच की। मुझे याद है बैटिंग फर्स्ट करते हुए बांग्लादेश ने अच्छा स्कोर मारा नहीं था और वेस्ट इंडीज के 70 पे 1 थे। बट नाहिद राना बड़ा बॉलर है, मतलब ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मुझे सरप्राइज करी, द वे बांग्लादेश ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, अग्रेसिव बैटिंग करी। जाकर अली ने पूरा मैच बदल दिया और उसके बाद आई थिंक इट वाज ऑल रिटन फॉर बांग्लादेश टू विन। 2009 का मैं रिमेंबर करता हूँ, बट 2009 में क्या था कि आई थिंक ये विक्ट्री से मच मच स्पेशल है क्योंकि द स्पेस अटैक जो बांग्लादेश के पास है अभी इज फैंटास्टिक। सिर्फ बैटिंग में मोर कॉन्फिडेंस लाना है एंड दिस टीम कैन डू सम वंडरफुल थिंग्स। एंड मैनचेस्टर सिटी, मेरे को लग ही रहा था यार मैनचेस्टर सिटी विल गेट देयर फॉर्म बैक अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी फाइनली प्ले द राइट लाइनअप व्हिच आई बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे प्लेड अकांजी, Diaz, Ake, they played on the left Guardiola, midfield में Gundogan, Bernardo, KDB was back, Doku, Grealish in the I will see Cam role and the striker in Haaland. ये लाइनअप है जो सिटी को बहुत पहले खिलानी चाहिए थी। दिस वाज देयर मोस्ट बैलेंस्ड लाइनअप एंड दे लुक वेरी वेरी गुड। और मैं ये कहूंगा आई थिंक सिटी इज गोना विन अगेंस्ट पैलेस इन दिस कमिंग सैटरडे और संडे एंड आई थिंक दे गोना बी बैक इन फॉर्म। बट आई थिंक ओवरऑल जो मिडफील्ड है ब्रो, आई जस्ट डोंट थिंक कि वो टाइटल वर्दी है इन कंपैरिजन टू लिवरपूल। अब लिवरपूल अगर गंदे फॉर्म पे चले जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट आई स्टिल बिलीव यार इट्स लिवरपूल्स टाइटल टू लूज। लाइक I think Liverpool most probably is going to still win the league this season as much as I think, because the lead they have got and the fixtures they have got, I just don't think they will drop too many points. Is their title to lose now? 7 points is still a massive gap and 9 over Manchester City.
So I still believe they are the favorites, but let's see, out in the Premier League, stranger things have happened. But yeah, Liverpool के भी बहुत ज़्यादा advantage है. And quickly, we discussed on the game against Southampton. It was a great victory. But I think we have to talk about the other parts of Chelsea and what we are really doing well. क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो I think हम बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं. And I believe we are going to do very, very well in the coming years. And I think ये मुझे लेके जाता है. Just a second, I have to change it. Yeah, just a second, अगली स्क्रीन अपडेट हो रही है. या नाउ यार ये बात मैं बहुत लाइक दिस इज नॉट अ थिंग व्हिच आई एम सेइंग जस्ट बिकॉज़ वी बीट इन साउथहैम्पटन 1-5 ट्राइंग टू बी रिएक्शनरी लाइक बड़ी चीजें कहना नहीं. मेरा वो स्वभाव नहीं है. आई थिंक वी हैव रियली राइट नाउ गॉट वन ऑफ द बेस्ट अटैक चेल्सी अटैक इन डेकेड्स. लाइक यार मैं एक टाइम था जब 2013 में लाइक आई स्टार्टेड सपोर्टिंग चेल्सी फ्रॉम 2008 और वो यार बहुत एक्साइटिंग टाइम था एज अ चेल्सी फैन. एटो, टोरेस, ऑस्कर, हैजार्ड, मार्टा, लाइक इट वाज अ गुड टाइम. फ्रैंक थे मिडफील्ड में. सो एज अ चेल्सी फैन वो टाइम पे हमारा अटैक बहुत एक्साइटिंग था. 2009-10 में तुम जानते ही या मल्लूडा, कल्लू, ड्रोग्बा, अनलका, लैम्पार्ड, बट डेप्थ नहीं होती थी उस टाइम और उस टाइम हमारी टीम पूरी अच्छी होती थी. आई थिंक उसके बाद हम ट्रेंचेस में थे. लाइक 2016-17 में कोस्टा, पेड्रो, विलियन, हैजार्ड, बट अदर देन दैट वी हैड नथिंग. उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन चेल्सी यूज्ड टू प्ले विलियन, पेड्रो एंड मोराटा. We have come so far now that we have got the likes of Cole Palmer, one of the best youngsters in the world. We have got the likes of Noni Madueke and Neto competing for the right position. Sancho, Felix, Mudryk competing for the left position. Jackson and Kuku for the top. I think the way we have gone in attacking department, the age, like the attacking quality, the age we have got, like all the players are most below 25 years of age, barring Kuku. We have got Esteban Willian coming next year, Candry Pies. The attacking quality, the profile of players, there's a false line, there's a target man, there's an attacker who can hold the ball up, dribble. We've got the right winger who has got a great attacking quality, scoring goals and assists. We've got the other one who might not give you GNA, but can absolutely destroy defenders for fun and score some absolutely beauties. We've got Palmer, who is all-round footballer. We've got Joao Felix. Yes, his end product is really poor, but yeah, Felix एक ऐसा बंदा है जो स्किल के थ्रू ही एक डिफेंडर की जान ले लेगा. और उसके बाद मुड्रिक, he is developing pace wise. मुड्रिक को कोई कंपैरिजन नहीं है. Pace wise he is electrifying. Sancho, genius on the ball, good with dribbling, and not a natural winger but very very smart footballer. जो जिस तरीके का अटैक हमने अभी खड़ा करा है चेल्सी फैन, चेल्सी टीम, रिक्रूटमेंट स्टाफ, और उसके बाद वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एस्टेबा विलियन जो नेक्स्ट ईयर कंफर्म्ड हो गए साइनिंग, वो आएगी. कैंडी पायर्स आएंगे. उसके साथ साथ दिस सीजन वी वर ट्राइंग फॉर अ टारगेट मैन सैम ओमोडीन. जब बोर्ड सारे बोर्ड पे हंस रहे थे कि चेल्सी क्या कर रही है, व्हेन आवर बोर्ड वांटेड टू रन, आई हैव टू से हैट्स ऑफ पेनी न्यूबी टू द रिक्रूटमेंट स्टाफ. वी हैव राइट नाउ गॉट द बेस्ट अटैक एज अ चेल्सी वी हैव गॉट इन डेकेड्स. एंड ये एक ऐसा अटैक है व्हिच इज गोना सर्व अस for the next 5 to 7 to 8 years. That's the biggest part. Jackson right now is on a 9-year contract. Palmer is on a 9-year contract. Sancho is a confirmed deal. Obligation to buy is done. Felix is going to be here, permanent signing. Along with that, you've got Mudryk, Madueke, Esteban Willian coming up. We are sorted for years right now. In comparison to अगर हम देखोगे लिवरपूल को, यार लिवरपूल सलाह का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, डियाज बहुत इनकंसिस्टेंट है, गैक्पो बहुत इनकंसिस्टेंट है, नूनेस मैं बात ना करूं तो बढ़िया ही रहेगा. यू गो टू मैनचेस्टर सिटी. आई थिंक इवन मैनचेस्टर सिटी दे हैव टू चेंज दिस अटैक. थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा. थोड़ा यंग अटैक है, द प्लेयर्स आर गेटिंग अ बिट ओल्ड, रिप्लेसमेंट करनी है. आर्सेनल के अटैक में भी आई थिंक क्वालिटी ऑफ डेप्थ नहीं है जो चेल्सी के पास है. एंड यूनाइटेड का अटैक आई थिंक इज नॉट रियली गुड इनफ टू फिनिश द टॉप 3 टॉप 4 इन द लीग. वी आर फीस्टिंग फॉर डेकेड्स एज अ चेल्सी फैन. वी आर फीस्टिंग हियर. और अगर हम रेगुलरली चैंपियंस लीग क्वालीफाई करेंगे, विल ट्राई टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल्स, कैरेबो कप्स, एफए कप्स, क्लब वर्ल्ड कप. The players will not stay at Chelsea. They will love to be here and win us trophies. We are feasting for decades right now with the attacking quality we've got. और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिस तरीके से हम टीम बिल्ड कर रही है. आई एम सो प्राउड ऑफ what we're trying to do. It's essential for Enzo Fernandez to put on a good performance more regularly. Agree यार, पूरा एग्री करता हूँ ब्रो, क्योंकि एंजो का ये मोस्ट प्रोबेबली इज थर्ड सीजन है चेल्सी में. So he has to start performing well. I fully agree with you, bro. And I think he is right now. Like manager right now is using him to perfection. He's getting more freedom right now. Defensive responsibility इतनी करनी नहीं पड़ रही. So I think we're getting the best out of Enzo right now, bro. Like ये चीज है. I was talking about Enzo Maresca, bro, the manager. I love him to bits क्योंकि he is utilizing every player. इस साल जब वो मैनेजर बने थे चेल्सी के, मीडिया क्रिटिसाइज कर रही थी why you're trying to get rid of players. चेल्सी की दो टीम्स बनी हुई है ट्रेनिंग ग्राउंड पे. And tight slap to the media by Chelsea and Enzo Maresca. Tight slap. Like he got rid of so many players who did not want to be here.
And right now, you've got a happy dressing room. Everybody's getting their chances. He's very clear with the players. He's not trying to be indirect. He's simply saying you have to do better. He's guiding them. He's trying to get the best of each and every player. And I'm so proud of my manager. I'm so proud of my team and what we're really trying to do. Fantastic work, the way we are really going about our business. And I think Enzo Fernandez right now is also playing really well. Like, put GNA aside, क्योंकि यार मैं midfielders को GNA से नहीं judge करता. I think if you're a football fan जो midfielders especially are a player like a box to box midfielder, if you're judging them solely on the basis of GNA, then I think you're missing the point of a midfielder. Midfielder role is a lot more than goal scoring and assisting. And right now, being very, very honest, I think Enzo Maresca is using each and every player to absolute perfection. Absolute perfection. We are doing a really, really good job, and I'm proud of everyone. I'm really, really proud of each and every player, the manager, the way he's using my players. I'm so proud. And देखो यार, I knew Enzo Maresca was a very talented manager जब वो आ रहे थे, but even I did not expect Chelsea to be in this position so quickly, which already states where we are going right now. I'm so proud of the team and the manager of where we are going and the young age जो इस team की है. I think we are going to feast for years to come, and that is the biggest thing which makes me really happy. The direction we are going, the type of team we are building, and the age we have got right now in this team, I think is really, really good signs as a Chelsea fan for what the future we are trying to build. And I think right now, I think it's freeze Nana. Computer was fine. I'm so sorry, guys. I thought it was freezing. I'm so sorry. Quickly, yeah, let's go to the next one to discuss. And just give me a second. Are Chelsea in a title race is a question. I think a lot of rivals are asking. They are thinking that Chelsea fans away जा रही है. Chelsea fans अपने टीम में pressure नहीं डालना चाहते. But यार guys ये केस नहीं है. मैं एक चीज honestly बोलूंगा. कितने rivals हैं? मैं हंस रहा था यार because I was remembering June and July. So I was listening to the predictions and I was banging my head to the wall. And sorry if I'm being disrespectful, but बहुत सारे लोग कह रहे थे चेल्सी सबसे गंदा रन क्लब है, चेल्सी को तो कुछ आता ही नहीं है, चेल्सी 8 आएगी, चेल्सी will be 8, 7th, and I was laughing. That do you even analyze teams before making your rubbish predictions? By being very honest, I'm so sorry, but before making your rubbish predictions, do you even analyze your teams? And Chelsea, why are you expecting us to be in title race when you were the one who predicted us to be 8, 9, 10? So this is something which I really don't understand. But are we in a title race? I will say most probably right now. I will say still no. My goal for my team this season is कि हमें UCL पे जाना है. We have to get UCL football. I think ये team अभी भी young है. I still believe yeah we can do really well this season. I still believe this team can get 77, 78 points. But यार मुझे नहीं लगता that we are a team that can go on a 10 match, 11 match winning streak. We are still inexperienced. We are still learning. We are the youngest team in the league, and this is why I don't want to put the pressure on the team. I think if we can win the next some matches after Tottenham, Brentford, Ipswich, Everton, Fulham, then my chest will grow. But right now, being very, very honest, I don't think we are absolutely in title race because we have finished 12th and 6th. And right now, as a Chelsea fan myself, my goal is for my team to win the top four, finishing nicely back in the UCL, try to win the Conference League, try to win the FA Cup, and try to get this Chelsea club back on track, which we're doing right now. So to be really honest, I still believe in on title race because we haven't shown that winning streak. If we can win the next 4-5 matches, I will say we are. But to be really honest, why this pressure? I think all the pressure right now should be more on Liverpool and Arsenal. I don't think on Chelsea. I think a bit on Manchester City, but not much because they have little in 4P. The pressure should be more on Arsenal because they haven't really converted their good season Arteta, and on Liverpool because of ugly season, Liverpool will go on a rebuild and they need to convert it this season. I believe when they've got the chance, you need to convert it. And I'll win a title race. I will only say this after like 5 to 6 more matches. If in the next 5, 6 matches we win all 5 and 6, then yes, my expectation will change. And I expect my side after that, with the depth we have got and Conference League where we can play a B team, then yes, we are in a title race. But right now, we are 7 points behind Liverpool. We are still not experienced to put 10 matches victory in a row, 11 victories in a row. So I just don't believe that we are in a title race right now. If we beat Tottenham, if we beat Brentford, if we beat Ipswich, if we beat Fulham, then yes, Chelsea can be in a title race. But right now, 7 points is still a huge gap, 3 matches. So let's see where we are. I think this season, the only thing that's been concerning is a big six form. And this is a good chance this Sunday to put it right, beat Tottenham away from home, and get that record back on track. Do let me know in the comments, people. What do you think? Are we in title race or not? Please, yeah, let me know in the comments.
And do like and subscribe, people. Your support really means a lot to me, people. Please do it. And quickly, let's go to the next one to discuss, guys. Quickly, a lot of slides to discuss. And again, this is why Chelsea future is sorted for so many years, and we are gonna feast for decades, guys. Absolute decades. Like I was not able to put every picture here. I put Todd Bowley and Iqbali because they have received a lot of criticism from the media that they don't know how to run a Chelsea football club. And I think from my side, I have to apologize. Their vision has been fantastic. I think media has to apologize. And overall, if you look at the players I put, I think our future is absolutely sorted. There are many 5, 6 more players I could have put, but the space was not there. Like you go on Cole Palmer, Aston Pavilion, there's the Chelsea attack in the future sorted. Then Noni Maduka is here, Neto is here. You got Nkuku, Jackson, Felix, Mudryk. The age, the profiles of the players, we are gonna feast because next season Chelsea can easily play a 4-3-3 formation with Estevao, such a good talented player that we cannot let this talent go to waste. And then you've got Cole Palmer in the pocket of spaces. You have got on the left side, develop Mudryk or a Felix, and then or a Neto, striker Jackson, who has grown leap and bound this season. This man is for me right now one of the best informed strikers in the world. He's really good in hold up play, dribbling, pace. The only thing that his game was lacking was a finishing, and is improving it this season. We are right now absolutely feasting. You got Nkuku to back Jackson up. You got players like Estevao William coming back. You got Kendrick Pius coming in the midfield. You've got Caicedo, Lavia, Enzo, and the Santos is on loan and is such a good footballer. Yugo Chukwu is still a player who's been wasted at Southampton. Very good player. Will be coming back, and again a very young player. Caicedo is even there, who I believe is a good talent, but not good enough to be starting 11 in Chelsea. You've got Gusto on the right. So even if James sadly see, hopefully for me, I pray to God, James is back fully fit and soon. And even if not, you've got Gusto there, who is such a good player. You've got Fofana, who is back this season. He's injured right now. Wishing the best for him. He's such a good centre back. You got Colville. You got on the left side Cucurella. Vega looks a very good talent for such a good price. We brought him. Sanchez and Jorgensen have a big test this season because I think if this season Sanchez doesn't do well, then we'll need to go for goalkeeper. And if we look at the age of this side, the talent, the profile, the way they are growing right now, Caicedo right now is a very young player, but one of the best midfielder in the world. Palmer, very young player, one of the best midfielder in the world. One of the most best attacking midfielder in the world. I apologize. Estevao Willian, one of the most highly rated youngsters in the world. You got Nicolas Jackson, one of the best, I will say, young strikers in the world. Livy Colville, one of the finest young left centre back in the world. So you have got so many good players in their position, and then you can talk about Enzo Fernandez, the likes of Lavias. We have got such good talent in a team, and now they've gelled. They are happy. They're developed. We are gonna feast for decades, guys. Absolute decades, and we're developing it nicely. We've got the right manager finally, and I think if you're not scared of Chelsea looking at this, you should be. We might not win the league this year, but we can go on a good dominating run. If next season we can convert it, win a Premier League trophy, or try to win a Carabao Cups, FA Cups, and get that winning experience, and these players play in the UCL, get that feeling, gel more. Oh my god, man, it's gonna be fantastic. So we are feasting for decades, people. Do you agree with me? Do let me know in the comments and like and subscribe, people, because your support and your opinion really means a lot to me, people. And quickly, yeah, let's go to the next one to discuss. Where is it? Come on, man. Is yeah. Now this is the chart I put for you people, but I show you why Chelsea have got such a good attacking depth. यार मतलब इसको देखो यार guys, please यार इसको जरूर देखो. Like and big up यार, big up Ramit, brother. It's so good to see you, man. It's really good to see you, bro. And thank you so much to join. Her support really means a lot to me. Thank you so much, man, to join. Really big pleasure and good to see you. Hopefully you're well and good. And जो भी chat में है, hopefully people are really well and good. तो यार चेल्सी की अटैकिंग डेप्थ अगर आप इस टेबल पे देखोगे इज इनसेन. लाइक अगर मैं आपको प्लेयर्स की प्रोफाइल भी बताऊं, जैक्सन फॉर मी इज अ प्लेयर जो होल्ड अप भी अच्छा कर सकता है, ड्रिबलिंग भी अच्छी कर सकता है, पेस बहुत अच्छी है, अटैकिंगली नाउ इज बीइंग क्लिनिकल. दैट्स आवर स्ट्राइकर सॉफ्टवेयर फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. जाओ फेलिक्स ना क्लिनिकल नहीं है, but Joao Felix for me is a player who is very good with his feet, great with his dribbling, and I'm so happy with what he's doing right now in terms of off the ball, on the ball, the spaces he creates for the other players. You got Nkuku, who can be the striker, who can even play in the pocket of spaces. And then Sancho, who might not be very pacey,
but he's a very good player on the ball. He sticks to the ball and attracts players, which eases the space for the other one. And Mudrik, and exactly, Mudrik is developing. Like Ramit भाई मतलब Mudrik जिस तरीके से सीजन खेल रही है, Mudrik has grown leap and bound. Mudrik एक ऐसा प्लेयर है जो मैंने हमेशा ट्रस्ट करा है. Like I believe उस लड़के में बहुत टैलेंट है. लिवी कॉल्विल ने भी कहा था, he is one of the best attacking shooter in the training ground में, and he's finally showing that. And even then he cannot get chances, which shows how good an attack has been. Mediuke producing goals and assists, 5 goals this season already. Neto, he might not be your GA player कि Neto यार he's not a player जो हमेशा goals and assists मानेगा, but he's such a good player on the ball. You got Palmer, who is a genius on the ball. You got Jackson, one of the best striker in the league. You got the likes of Sancho and Felix, so good players on the ball, and our attack is sorted. You look at the depth and you compare it to Arsenal, you compare it to City, you compare it to Liverpool. The depth, the age, the profiles, this attack is sorted for years. And इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि चेल्सी अटैक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द डेकेड कि ये जो हमने अटैक अभी क्रिएट करा है, दिस इज फैंटास्टिक. लाइक यार हम एक टाइम पे ऐसे थे कि रमित भाई भी वैसे एग्री करेंगे, वी यूज्ड टू सी विलियन, पेड्रो एंड मोराटा एट वन टाइम अंडर सारी जब हैजर्ड इंजर्ड होते थे. वी हैव फीस्टिंग नाउ, वी डिजर्व दिस यार. द जॉब रिक्रूटमेंट टीम इज डन यार. आई हैव टू गिव देम क्रेडिट. मैं दाद देता हूं लोगों को यार, बिकॉज आई क्रिटिसाइज देम. मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, आई क्रिटिसाइज देम. जो मेरा राइट था क्योंकि मेरी टीम 12th पे थी and I was not understanding कि इतने young players क्यों लेके आ रहे हो. But now I can see what they're trying to do and I have to praise them. Big work to them क्योंकि they face a lot of criticism and I think now they deserve their praises. I think this season bro मुश्किल है. Like being very honest Manchester City fan कि इस season I believe बहुत मुश्किल है. We can not impossible, but bro I don't think so this season is possible. I think next season is the one we need to go for it. Like next season में जब हम जाएंगे, if we can bring one more centre back and I will say a more experienced goalkeeper, I think we can actually go for it. But right now, bro, मुझे नहीं लगता कि right now कि हम अभी जीत पाएंगे. If we can, I'll be the most happiest person in the world. But मुझे नहीं लगता bro यार कि अभी हम शायद जीत पाएंगे. But if we can, fair enough. It was all about our attack getting together, gelling together. Absolutely रमित भाई, क्योंकि हमारी टीम का ये था कि पिछले साल क्या था कि बहुत सारे प्लेयर्स और भी नहीं आए थे. So it was always going to take time. बट आई थिंक लास्ट सीजन टीम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था इन टर्म्स ऑफ द जेल टुगेदर. तभी मैंने कहा था कि ये ट्रांसफर विंडो रमित भाई चेल्सी की बेस्ट ट्रांसफर विंडो थी क्योंकि ये स्टेबल ट्रांसफर विंडो थी. 15 प्लेयर नहीं गए, 15 प्लेयर नहीं आए. हमने ड्यूसबरी हॉल लेके आए टू रिप्लेस कॉनर गैलेगर. पेड्रो नेटो हम लेके आए टू इंक्रीज आवर अटैकिंग डेप्थ एंड क्वालिटी. उसके साथ एस्टोवर विलियन वी कंफर्मड हिम फॉर द नेक्स्ट सीजन जो एक फ्यूचर साइनिंग थी. तो आई थिंक इस सीजन टॉसिन हु रिप्लेस ट्रेवर चलोबा. तो आई थिंक चेल्सी वर वेरी क्लियर व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू. Players had gelled together, and सबसे बड़ी चीज, we changed the medical department, and I think right now our players are fit, our players are well, and I think Pochettino was a more like all due respect to Pochettino was an aerobics coach, like in terms of running, pressing, and I think that used to cause a bit of injuries. That's just me thinking that might be the reason, but now players fit hai, players fine hai, and that's another massive boost. And an attack, our midfield, everything is gelling together, and all things are going to right pieces right now, मैं कहूँगा. And this season is all about being the little horse in Mourinho's ring. Absolutely, I बिल्कुल मैं like रमित भाई अगर मैं वो सीजन रिमेंबर करूँ, उस सीजन में भी चेल्सी का ये था कि हम अटैकिंगली अच्छा कर रहे थे, हम डिफेंसिवली उस सीजन बहुत गोल्स खा रहे थे. मुझे अब तक याद है बिकॉज यार मैं वो डिफीट भूल नहीं सकता. सनडरलैंड डिफीट मैं भूल नहीं सकता बिकॉज आई थिंक वी कुड हैव वॉन द प्रीमियर लीग. उस सीजन पे एक स्टेज था जब लिवरपूल बॉटल कर रही थी, सिटी वर नॉट इन अ ग्रेट फॉर्म. मुझे लग रहा था वी कैन विन द लीग क्योंकि आई रिमेंबर मेरी प्लेस पे बाढ़ आ गई थी. नॉर्विच मैच वाज वन जो हमने ड्रॉ करा था नील स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे, और फिर संडरलैंड से हम 1-2 हारे थे स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे. फाबियो बोरेनी की पेनल्टी. आई वाज लिटरली ऑन टेयर्स दैट डे क्योंकि आई थिंक दैट वाज अ क्लिंचर. एंड उसके बाद वी बीट लिवरपूल एंड देन वी लॉस्ट टू एटलेटिको, बट इट वाज डन. बट दैट वाज अ सीजन वेयर वी डेवलप एंड देन वी किल्ड इट द नेक्स्ट सीजन. ये सीजन कैन बी आल्सो द वन वेयर वी आर अ लिटिल हॉर्स and then we can go on and try to win the league next season. But एक ही चीज मैं कहूंगा, I don't want Arsenal to win the league this season क्योंकि Arsenal अगर जीत गई so they will become very very scary. And you guys need to be second most successful regular team, but credit to us, we went beyond you guys and became the second most successful. I think I agree. Like Manchester City की एक चीज की मैं बता दूंगा, Manchester City bro like you converted to dominance. Chelsea की प्रॉब्लम ये होती थी कि we used to win the title, फिर कभी inconsistent season था. मतलब अगर मैं रोमन एरा की बात करूं तो रोमन एरा टिल 2012 वाज वेरी कंसिस्टेंट. उसके बाद वी आई रिमेंबर वी फिनिश थर्ड, वी फिनिश फर्स्ट,
we finished 16th, नहीं 16th, sorry sorry not 16th, 10th. उसके बाद we won the title, we finished 5th. तो वो एक प्रॉब्लम थी चेल्सी की कि हम एरा नहीं बिल्ड कर पाए. Like Ancelotti की sacking was a really like it still hurts. Mourinho leaving us after 3.5 years in the first spell, वो I think was a wrong move. So I think the problem with Chelsea was कि हम बहुत like rash थे decisions making में. Manchester City have trusted Pep Guardiola, and you've seen the fruit of that. Manchester City have continued their dominance, and credit to Manchester City. What they've done, 4P is unbelievable. Like यार, I think people credit नहीं देना चाहते, but doing 4P is unbelievable, and what Manchester City have done is unbelievable. इसलिए इस सीजन में मैं नहीं Manchester City criticize कर रहा, because I know winning 5 in a row was always going to be impossible. It was always going to be tough. और मैं सच कहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मैनचेस्टर सिटी इस साल भी प्रीमियर टाइटल जीत जाती है, इट्स अ शेम स्पेशली ऑन आर्सेनल एंड लिवरपूल, क्योंकि इफ दे विन द प्रीमियर लीग फ्रॉम दिस सिचुएशन, देन आर्टेटा मस्ट बी आस्क्ड क्वेश्चंस कि यार कब जीतोगे लीग, कब कन्वर्ट करोगे यार. एंड the same goes for Liverpool in terms of key. Now City are at its worst. City have done the 4P. They're tired and they still are killing you. That's not good. If a lion is tired, done, he cannot even get up and then he's still eating you, then like yeah, क्या कर रहे हो यार तुम? And I think if Manchester City win this year, they will go down as one of, if not the most dominant, I will say, footballing team in the world. क्योंकि 5P इस लीग में करना is unbelievable. Because this is the most toughest league, सबसे hardest league in the world. और यहाँ पे अगर आप 5 in a row जीत रहे हो यार, I think it's absolutely unbelievable. मैं सच कहूँगा, it's absolutely unbelievable. And quickly, I want to go to the next one. Yeah, I think next net is on the paper, and I think defensively we have been really solid. Like मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ जब मैं लोगों के एनालिसिस सुन रहा हूँ चेल्सी के बारे में, that they're not good defensively, they don't know what they're doing. But जब भी मैं अपनी टीम को खेलते हुए देख रहा हूँ, I know what my manager is trying to do. I know the patterns मेरा मैनेजर खेलने की कोशिश कर रहा है, and I think defensively हम पिछले कुछ मैचेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा खेले हैं. मेरे को समझ नहीं आती कि why people say कि चेल्सी डिफेंसिवली अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अगर देख रहा हूँ हम डिफेंसिवली सॉलिड अच्छा कर रही है, हमारा सेटअप भी अच्छा है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी बोजो मूवमेंट्स है. लाइक फोफाना ने जैसे पिछले मैच में वो एक पास दे दिया वॉटकिंस को, सैंचेज कई बार सिंपल मिस्टेक कर रहा है, वो मैनेजर पे नहीं है. आई थिंक राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ सेटअप हमारे पास इनफ बॉडीज एट द बैक है. पिछले 2 मैचों में हमने रिस्क लिया था. एस्टन विला को हमने प्रेस हाई करा था जो रिस्की था, पर वो एक सिचुएशन के अलावा फोफाना एंड कॉलविल किल्ड एस्टन विला. बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी. और उसके बाद पिछले मैच में यार हम वीक ऑपोजिशन को खेल रहे थे, सो वी वर प्रेसिंग फ्रॉम द स्टार्ट. उसके बाद भी यार साउथहैम्पटन डिड क्रिएट चांसेस, उन्होंने बहुत चांसेस क्रिएट करी, बट व्हेन दे पुट द क्रॉस इनटू द बॉक्स, डिसाजी एंड टॉसन वर इमेंस, एंड दे आर मैं कहूंगा बैकअप सेंटर बैक्स हैं, एंड दे प्लेड रियली वेल. तो हमारा हर मैच के हिसाब से मैनेजर सेटअप डिफरेंट कर रहा है. अगर हम एक हाई अच्छी अटैकिंग ऑपोजिशन को खेल रही है तो हम थोड़ा मोर डिफेंसिव हो जाते हैं. जब हम एक वीक ऑपोजिशन को खेल रहे हैं हम और अटैकिंग हो जाते हैं. तो आई नो व्हाट द मैनेजर इज ट्राइंग टू डू, हमारा सेटअप क्या है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. मैं सच कहूंगा, आई एम सो हैप्पी विद व्हाट वी आर रियली ट्राइंग टू डू. एंड आई एम जस्ट वरीड व्हेन डिसाजी टॉसिन विन आउट प्ले टुगेदर. मैं पूरा एग्री करता हूं इसमें रमेश भाई कि ये एक वरी है, बट मैं कहूंगा बारिया शेले ने पिछले कुछ मैचेस से बहुत इंप्रूव करा है. अगर मुझे वरी है रमेश भाई, वो डिसाजी की कि डिसाजी रिकवर अच्छा करता है. लाइक आई लाइक डिसाजी एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन, बट डिसाजी मिस्टेक्स बहुत कमिट करता है. टॉसिन फॉर मी, मैं कहूंगा टॉसिन इज स्टिल मच बेटर देन डिसाजी, एंड बारिया शेले ने रिसेंट वीक्स में बहुत अच्छा खेला है, मैं सच कहूंगा. पर मैं इसमें एग्री करता हूं कि हमारी फर्स्ट चॉइस डिफेंस ने बहुत अच्छा खेला है. और लोगों को एक चीज रिमेंबर करनी पड़ेगी कि फोफाना ने 2 साल से इस सीजन के पहले कोई फुटबॉल भी नहीं खेली थी. फॉर हिम टू स्टिल प्ले दिस वेल is fantastic. Like अगर Fofana can rediscover his Leicester form, मैं कहूँगा he is one of if not the best centre back. Like Van Dijk तो है ही है, Saliba, Konate, but he is in that category. But वो injuries ने उसको kill कर दिया because Fofana used to be immense. And मैं कहूँगा अभी वो near जा रहे अपने form में. ये injury was again a disappointing one, but hopefully I pray to God कि वो fully fit fine हो and he returns very well very soon. क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई player injured हो किसी भी club का, because it's very painful for these players यार. And it really hampers their career. वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए. And I wish the best for Fofana. And Fofana, Colville, Cucurella, Gusto. I think हमारी defense is very sorted. Cucurella का मैं कहूँगा attackingly he has improved very much, and defensively I can trust him with my life. Gusto, I think is learning a new role, but I love Gusto to bits. I believe there's a lot of talent in the boy. इस season क्या है वो नया role सीख रहा है, तो थोड़ा सा इसका form dip हुआ है. Colville फाइनली यार मैं पॉचेटिनो को एक ही चीज का हमेशा कहता था कि पॉच मेरे भाई प्लीज कॉलविल को सेंटर बैक पे खिला लो यार.
and he did not used to play him. Now, finally, when you play a player in the correct position, you see the rewards. And Colville Fofana ने बहुत अच्छी पेयरिंग बनाई है. And I'm so happy to see the way they are playing right now क्योंकि हमारी defense right now is very very settled. We are playing really really good, and we are settled. We play well. We pass really well. We defend really well right now. And I'm so happy with what we are really really trying to do. मैं honestly कहूँगा I'm really happy with what we're trying to do right now with the team. And quickly यार I have to go to the next slide as well कि I think if I can see on my screen ये मैं एग्री करूंगा, ये शायद मेरे से मैनचेस्टर फैन पे एग्री करेगा, मैनचेस्टर फैन इन द चैट कि दिस इज द लास्ट चांस फॉर लिवरपूल इन सिटी. अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो लिवरपूल पे प्रेशर नहीं है इस सीजन क्योंकि दे ब्रॉट अ न्यू मैनेजर और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था लिवरपूल विल बी हियर. बट यार बात वही होती है ना कि व्हेन यू आर हियर यू गॉट द स्टार्ट, ट्राई टू कन्वर्ट इट. क्योंकि लिवरपूल का देखो सलाह का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इज नॉट रियली गुड लुक राइट नॉट एफएसजी. नाउ आई थिंक वो एक्सटेंड करेगी बट दे माइट नॉट. वैन डाइक का कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे बहुत लाइक लिवरपूल फैंस प्लीज मुझे चैट में बताना बट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है गाइस आपके लिए कि तीनों प्लेयर्स रहेगी अपने क्लब में. मुझे नहीं लग रहा कोई एक या दो प्लेयर्स तो जाएगी. तो इस सीजन अगर लिवरपूल प्रीमियर लीग जीतती भी है उनको अपनी टीम को रीबिल्ड करना पड़ेगा. वो नहीं भी जीतती उनको अपनी टीम को रीबिल्ड करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट सीजन एक ड्रॉप ऑफ तो 100% गारंटेड है. ऑल डू रिस्पेक्ट यार. एंड मैनचेस्टर सिटी का यार देखो, मैनचेस्टर सिटी फैन की मैनचेस्टर सिटी फैन में से एग्री करेगी कि मैनचेस्टर सिटी का यार उनको एक रीबिल्ड चाहिए. दिस साइड हैज बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट कुछ प्लेयर्स है जो at the end of their careers है. Like they never signed a replacement for Rodri, they need to sign one. Kyle Walker, all respect to him, he's a legend for Manchester City, did really well at Tottenham, but right now he's done at this level. I'm so sorry यार. And they need to find a centre back. Diaz fit नहीं रहते, Stones तो कभी fit नहीं होते. They need to find a replacement for them. And I still believe in the attacking department. Doku is still very inconsistent. Savini is very young. केविन डी ब्रूने इज एट हिज लास्ट लेग्स. तो आपको एक और अटैकर एक्सपीरियंस साइन करना पड़ेगा एंड वन मोर मिडफील्डर. और अगर आप एक ही विंडो में 5 to 6 प्लेयर साइन करोगे, टीम को जेल होने में, अंडरस्टैंड करने में पेप का स्टाइल टाइम लगेगा. सो बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक सिटी विल आल्सो गो टू रीबिल्ड. एंड सिटी got hampered by injuries, Bob, KDB, multiple center backs and Rodri. मैं से पूरा एग्री करता हूँ रमेश भाई, पर वही है ना, सेंटर बैक्स वो इंजर्ड हो रहे हैं जो हमेशा इंजर्ड रहते हैं. लाइक जॉन स्टोन्स, आई रिस्पेक्ट जॉन स्टोन्स बट he is never fit. And मैं कहूंगा defensively John Stones is not one of the best. John Stones is a Rolls Royce on the ball, but I think defensively he's a bit iffy. Rodri like इतनी बड़ी इंजरी के बाद आ रही है, you don't want to rush him back. They always needed to sign a replacement, उन्होंने नहीं करा and that was the problem. Oscar Bob very very good talent. उसके अलावा भी I think they need a player in the profile of like a Bruno Guimaraes also in the midfield. केविन डी ब्रूने इन द फ्यूचर लाइक कितने सालों तक और उन पे डिपेंड कर सकते हो. सेम फॉर बर्नार्डो, लाइक ही इज प्लेड टू मच आउट ऑफ स्किन. तो सिटी के पास बैकअप लेफ्ट बैक पे नहीं है फॉर गॉर्डियोल, क्योंकि गॉर्डियोल यार मैं एक चीज कहूंगा, गॉर्डियोल इतने सारे मैचेस एक साथ खेल रहे हैं, मतलब ही कैन नॉट इवन गेट अ रेस्ट. दे डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर गॉर्डियोल. तो एक लेफ्ट बैक भी चाहिए हु कैन compete विद गॉर्डियोल, या गॉर्डियोल सेंटर बैक पे चले जाए. बट आई थिंक अटैकिंगली गॉर्डियोल राइट नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अटैकिंग लेफ्ट बैक इन द लीग. तो सिटी को रीबिल्ड चाहिए. अब पेप, आई थिंक पेप इज द बेस्ट पर्सन टू डू इट, बट पेप को भी टाइम लगेगा. तो ड्रॉप ऑफ होगा सिटी का. तो लिवरपूल सिटी का जब ड्रॉप ऑफ हो रहा है, यहाँ पे दो टीमें बचती है, आर्सेनल एंड चेल्सी, एंड दे नीड टू कैपिटलाइज अपॉन इट, स्पेशली आर्सेनल. क्योंकि यार आर्टेटा, ऑल क्रेडिट टू हिम, ही हैज डन अ रियली रियली गुड जॉब. आर्टेटा हैज आर्सेनल को अच्छे से बिल्ड करा है, डिसिप्लिन. आर्सेनल आर नाउ अ टीम आई डोंट वांट टू प्ले, आई हेट देम इन टर्म्स ऑफ लाइक they are so good, they are physically strong, they're aggressive and they're bully. So Arsenal have changed to team they used to be, but they have to convert it now. They really really have to convert it, and this could be the last dance next season for Arsenal. क्योंकि अगर इस सीजन में प्रीमियर लीग नहीं जीतते, नेक्स्ट सीजन पे नहीं जीतते, तो यार अगर आप आर्सेनल फैन वीडियो देख रहे हो, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि क्या साका नहीं पूछेगी यार मैं कब तक बिना ट्रॉफी के रहूंगा. ओडेगार्ड नहीं पूछेगी, आपके मोर डेवलप प्लेयर्स, गेबल सलीबा, मैड्रिड नहीं आएगी, सिटी नहीं आएगी, लिवरपूल भी आ सकती है. यू नीड टू कीप दिस प्लेयर्स हैप्पी. तो एक टाइम पे तो आर्सेनल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाई प्रेशर आर्सेनल पे है. क्योंकि चेल्सी के प्लेयर्स थोड़े से मोर यंग है, तो वो मोर रेडी होगी पेशेंट होने के लिए. तो यहाँ पे प्रेशर नेक्स्ट सीजन विल बी मोर ऑन आर्सेनल फॉलोड बाय चेल्सी. एंड मैं कहूंगा चेल्सी को नेक्स्ट सीजन कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बट इस सीजन ऑल द प्रेशर इज ऑन आर्सेनल एफसी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं मुझे बता सकते हैं, बट आई थिंक ऑल द प्रेशर फॉर मी इज राइट नाउ on Manchester City. Sorry, Arsenal यार क्या क्विकली यार. अब हम जाते हैं नेक्स्ट वन पे वेरी वेरी क्विकली, व्हिच इज ऑल प्रेशर आर्सेनल. और मैं इस पे आता हूं क्यों,
क्योंकि यार आर्सेनल फैन बेस को ऑल रिस्पेक्ट, मैं किसी को लाइक इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हम फैंस है, वी ऑल आर पैशनेट, हम सब अपने क्लब को सपोर्ट करते हैं, बट आर्सेनल फैन बेस थोड़ा सा, यार मैं सच कहूंगा चेल्सी फैन कह के भी, बट थोड़ा ज्यादा पैशनेट है। लाइक अगर वो जीतती है वो थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, वो हारते हैं वो थोड़ा ओवर रिएक्शनरी हो जाते हैं। तो अगर इस सीजन आर्सेनल नहीं जीती, आई थिंक अ लॉट ऑफ आर्सेनल फैंस आर गोना लूज पेशेंस विद अटेटा, वो नेगेटिविटी विल क्रीप इनटू नेक्स्ट सीजन, और नेक्स्ट सीजन सारा प्रेशर अटेटा पे होगा, फैंस फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे, वो क्लब को हेल्प नहीं करेगा। और नेक्स्ट सीजन चेल्सी विल बी बेटर, यूनाइटेड विल बी बेटर, लाइक सिटी विल बी रिफ्रेश्ड, लिवरपूल, अ न्यू लिवरपूल era will start. तो यार you really want to be in the pressure. Like Arsenal are such a good team right now. They on paper they're still one of the best team in the league right now. You need to convert it. There is real pressure on Arsenal, and I think this season they're 7 points behind Liverpool. They can still come back in this season. They've still got Gabriel Saliba, one of the best centre back partnership in the league. Timber, Calafiori. You've got the likes of one of the best goalkeeper in the league, Raya. You've got, I will say, Declan Rice, Partey, जो अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं. Harvest is doing his job. Saka, Martinelli, Odegaard. अगर नेक्स्ट सीजन आर्सेनल एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती है ओडेगार्ड एंड साका की, कि अगर वो टायर्ड है तो ही कैन प्ले इंस्टेड ऑफ देम, लाइक मोहम्मद कुडूस और एनीवन एल्स, दे कैन फाइंड द प्लेयर जो एक डिफरेंट चीज उनको प्रोवाइड कर सके, दे कुड बी अनबीटेबल. So pressure is on Arsenal, but at some point they have to convert it. And मैं honestly कह रहा हूँ, कोई criticism नहीं, कोई banter नहीं, they need to start converting it with all due respect. And Saliba will move to Real Madrid next season. I think मैं एग्री करूँ इसमें, पर मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन नहीं. आई थिंक रियल मैड्रिड की एक स्ट्रेटेजी रहती है रमित भाई की, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द प्लेयर डाउन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि उसका 2 या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहे और उसका प्राइस कम करवाना. मैड्रिड की स्ट्रेटेजी, उन्होंने एम्बाप्पे के साथ भी ये करा, उन्होंने एक तरीके से हैजर्ड के साथ भी ये करने की कोशिश की थी, कोर्टुआ के साथ उन्होंने ये कोशिश करी थी. मैड्रिड इस मामले में डर्टी है, बट आई रिस्पेक्ट देम, उनकी डोमिनेंस है, दे अट्रैक्टफुल, तो दे ऑलवेज यूज द बेस्ट वे, क्योंकि पेरेज इज अ जीनियस in terms of these things. Perez is a genius, and I think he will try to wait. He will try to get Trent next season, Alphonso Davies next season, और अगर Arsenal next season title नहीं जीती, he will pounce on Saliba. This is why Arsenal fans को मैं एक ही चीज कहूंगा कि good times they might be temporary, they're not permanent. So when you're in the good times, यार capitalize it. You cannot just keep sitting on your laurels and like हम अगले साल जीत जाएंगे उसके साथ कर जाएंगे, ऐसे नहीं चलता. इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूँ मैनेजर आउट हो जाओ, बट एट सम पॉइंट you guys need to convert it. And Guardiola set a series for at least 6 years since the guys really. I think he's one of the best. Like he's one of the best. Yeah, matlab, he is man. I love Guardiola in terms of like what he can do. Like he is so young. He can play multiple positions and he's still one of the best signings. मैं कहूँगा मैनचेस्टर ने पिछले 2 साल में करी है, क्योंकि सिटी के रिक्रूटमेंट या मैं कहूँगा पिछले 2 साल में ना वो सेम बात नहीं रही सिटी के रिक्रूटमेंट की जो पहले होती थी. आई थिंक अभी सिटी ने जो रिक्रूटमेंट करी है बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट करी गॉर्डियोल की. Goriol, मैं कहूंगा कहने की Savinio, क्योंकि I really see a great future for Savinio. I think these are very good signings for Manchester City, and 3 or 4 signings more, they're set for decades, bro. They're absolutely set. And quickly, I have to go on the next slide quickly, which is the one. I think our midfield is set for years, and I've been saying this for a long time. My midfield yard is perfect. But we've done the transfer window has been perfect and absolute perfection. क्योंकि यार अब देखो मैंने सिर्फ 4 प्लेयर्स की फोटो डाल पाया, युग चुकू, कासेडाई, all are missing. But just see what midfield we've got. Like Lavia is a DM for a team. He's press resistant, good on the ball, and finally fit. Caicedo finally अपनी सही पोजीशन पे खेल रहे हैं. I still यार मैं उसको नई DM में देखना चाहता. I want to see Caicedo play higher up the field in the box to box role. And आपने देखा यार media will never highlight it, but since January Caicedo बहुत अच्छा खेले. Caicedo has played so well for Chelsea. His through passes, passing, long passing, short passing, his overall quality, his defensive work, tackles, interceptions, Caicedo, top class, and is slowly becoming a leader. Enzo Fernandez, जब Enzo वो pressure नहीं होता defensive responsibilities का, he's absolutely perfect, giving the balls to the attackers, helping transition from defensive midfield or midfield to attack. He's very key for us. Then we've got Andre Santos right now on loan to Strasbourg. I really want to see this kid यार, he's such a good talented player, बहुत अच्छा player है Andre Santos. और उसके साथ आज यूगो चुकू हमने वेस्ट करा उसको साउथहैम्पटन बेच के, we should have sent him somewhere else for a loan. He's also a very good DM, young player, and यार हमारे midfield set है for many years. That's the best thing which makes me really happy, that a team and a lot of profiles are set for years. And I think for the manager, he has done a perfect job and I'm proud of him.
The job that he has done has been absolutely perfect, and I'm proud of the manager, and I have to give him the credit. He's an absolutely fantastic job. Hopes this continue, and I love Maresca to bits. एंड मैंने एक ही चीज कही स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि यार अभी मैं अभी भी बिलीव करता हूँ वी कैन डू समथिंग अमेजिंग. एंड्रे सैंटोस एब्सोल्युटली ब्रो, लाइक एंड्रे सैंटोस एक ऐसा प्लेयर है जो डीएन से भी बॉल कैरी कर सकता है और बॉक्स टू बॉक्स रोल भी अच्छे से खेल सकता है. मैं चाहता था कि इस सीजन हम उन्हें स्क्वाड में रखे और कॉन्फ्रेंस में यूटिलाइज करें, बट आई थिंक ड्यूसबरी हॉल वाज आल्सो साइन, तो वहां पे चेल्सी को लगा देयर वाज नॉट नेसेसिटी टू रियली कीप हिम. पर यार ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. ये प्लेयर वेस्ट नहीं होना चाहिए. लाइक कासेडाई भी अच्छा प्लेयर है, बट कासेडाई उस लेवल का नहीं है. I think Santos is a very very good talent which we cannot really waste for me. बहुत अच्छा प्लेयर है. लाइक जो मार्केट में अगर आप चाहोगे ऐसा प्लेयर शायद 50 मिलियन में भी ना मिले, 60 मिलियन में भी ना मिले. Santos is really really good. और अगर मैं फिक्चर लिस्ट देखूं गाइस, if you see Chelsea's fixture, I will talk about Chelsea being the title race if we win all these fixtures. Because Tottenham away will be a big 6 victory. Brentford is a fixture जो हमें हमेशा तंग करता है Stamford Bridge पे. Everton, Goodison Park, bad memories भरी पड़ी है जिंदगी में. और Fulham. Win these fixtures and then we'll see where we are and we'll talk. But abhi main kahunga all the pressure is on Arsenal, it's not on Chelsea. Our job is little horses, try to get UCL and have a nice and enjoyable season. And last part is video का है before I end क्योंकि it's gonna be a good one. And मैं रमी भाई के क्वेश्चन पे लेना चाहता हूँ, what do you think about goalkeeper situation? I think रमी भाई मैं ये कहूँगा सैंचेस का, like on one hand I do think that he has got something in him क्योंकि सैंचेस सम मैचेस में ऐसा खेलता है कि जैसे सुपरमैन हो, बट कई मैचेस में वो ऐसा खेलेगा कि जैसे यार कि जीरो मैन बन गया. लाइक मैं रिस्पेक्टफुली अगर सैंचेस को वो चीज कहूँ, योगेंसन अभी अच्छा खेल रहे हैं, बट आई थिंक हमें योगेंसन को और देखना पड़ेगा बिफोर वी सी दैट ही इज अ सॉल्यूशन. तो मैं यही कहूंगा कि ये सीजन वी नीड टू परसिस्ट विद सैंचेस एंड योगेंसन, गिव देम द होल सीजन. अगर हमें लगता है कि सैंचेस इंप्रूव्स, योगेंसन इंप्रूव्स, तब शायद हम वी कैन सर्वाइव अनदर सीजन. But if we think that Sanchez is not good enough, we sell him, we keep Jorgensen, and we go for a top goalkeeper. But अगले season we need to go to the final line क्योंकि मुझे लगता है ये season is all about being in the top 3, top 4. Next season we have to start thinking big. We have to start having the vision to try to win the league. And Dewsbury Hall को sell करते, getting Santos, Carney sold and Caicedo loan. I think यही एक domino effect होता है लाइक रमेश भाई, क्योंकि अभी कानी को भी चांसेस नहीं मिल रही है एंड चेल्सी ट्राई कर रही है उसको सेल करने को. कास्टेड आई तो चेल्सी विल ट्राई टू सेल, मैं सच बोलूंगा चेल्सी विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ हिम. नेक्स्ट सीजन यूगो चुपू विल कम एंड बी अ बैकअप फॉर लाविया. आई थिंक सैंटोस विल कम एंड चुकामेका आई थिंक इज मोस्ट प्रोबब्ली गोना गेट सोल्ड. लाइक आई लाइक सी, मैं ड्यूसबरी हॉल को लाइक करता हूं, मुझे लगता है ड्यूसबरी हॉल इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एंड आई लाइक हिम. पर मुझे लगता है जब आप एक प्लेयर को ऐसे लेके आते हो तो कहने कि यू टेक अपॉर्चुनिटी अवे फ्रॉम अदर्स. लाइक हम ड्यूसबरी हॉल लेके आए, there was the end of Chukwuemeka at Chelsea and यही एक प्रॉब्लम होती है. लाइक कई बार मुझे लगता है कि Chukwuemeka was the one जिसको हमें बैक करना चाहिए था. And I've evolved her Mike Pender's number 1 next season. I think he's a very good talent भाई, बहुत अच्छा talent रमेश भाई, ये मैं एग्री करता हूँ, बट प्रेशर उस पर ज्यादा होगा अगर वो स्ट्रेट अवे नेक्स्ट सीजन आया. बट ब्रो मैं चेल्सी के पास मतलब इतने यंग गोलकीपर्स है ना, लाइक वी हैव गॉट Sanchez, Jorgensen, Mike Penders, Gabriel Sonina. Like, and there's another one we have signed from River Plate and मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, एक और प्लेयर है who is a 16-17 year old. Like we have a lot of young goalkeepers on a list. तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि चेल्सी जाए और एक 60-70 मिलियन का गोलकीपर ले आए एंड तब हमें योगेंसन को बेचना पड़ जाए, हमें माइक पेंडस का टैलेंट हम वेस्ट कर दे, स्लोनीना को बेचना पड़ जाए. तो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे पास 6 से 7 गोलकीपर्स है, हमने उन पे इतना पैसा लगाया है, then why we need to go for outside solution. तो हमें कहीं ना कहीं इन पे इसको वर्क करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारा फेलियर है कि वी हैव साइंड सो मेनी गोलकीपर्स एंड नो वन वर्क्स. एंड क्विकली यार मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, राइवल्स जो कह रहे हैं कि चेल्सी हैव टू विन द लीग, दे स्पेंड 1.5 बिलियन. यार गाइस मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सबके अपनी प्रेडिक्शंस होती है एंड आई रिस्पेक्ट इट. बट बहुत सारी मैंने प्रेडिक्शंस देखी थी जहां पे लोग ये कह रहे थे कि चेल्सी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनकी 11 से मैं एक भी प्लेयर नहीं लूंगा, 4 से 5 बुल्स प्लेयर्स विल स्टार्ट इन द चेल्सी 11. मतलब मैंने ऐसे ऐसे क्लेम्स देखे थे. और राइवल्स ने कहा था कि एस्टन विला, न्यूकासल, मैनचेस्टर यूनाइटेड जिन्होंने कुछ नहीं अचीव करा था लास्ट सीजन इन टर्म्स ऑफ लीग, वो चेल्सी से ऊपर फिनिश करेंगे. बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट करा था चेल्सी विल बी 8th. तो यार अब क्यों हम पे प्रेशर डाला जाए टू विन द लीग? यस हमने 1.5 बिलियन स्पेंड करा है, पर उसमें से यार 700-800 मिलियन इज ऑन प्लेयर्स लेस देन 20 इयर्स ऑफ एज, 21. लाइक हमने बहुत सारे यंग प्लेयर्स साइन करे, तो कंटेक्स्ट तो भी होना चाहिए ना. Then why right now you're putting the pressure on Chelsea? But you were the guys जो कह रहे थे कि Chelsea को 8th आएगी, Chelsea is a worst run club.
एंजो मेरेस्का सैक हो जाएगा दिसंबर से, तो लाइक मेक सेंस यार, लाइक यू कैन नॉट पुट दैट प्रेशर ऑन टीम दैट इज सो यंग राइट नाउ। मेरे लिए यही है, इफ वी कैन डू इट अनबिलीवेबल, बट आई थिंक दिस टीम इज स्टिल वेरी यंग एंड मैच आते टीम डेवलप होगी, इस प्रेशर में ना आए। तो इसी के साथ आई एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच है जिन्होंने ज्वाइन करा, मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा रमित भाई का। आफ्टर सो मच टाइम रमित भाई आई सॉ इन द चैट, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। एंड मैनचेस्टर सिटी फैन यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू सो मच मैनचेस्टर सिटी फैन, जिन्होंने भी ज्वाइन करा, थैंक यू टू ऑल द गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं आशा करता हूँ